Assalamualaikum. Today I will explain briefly about the pituitary gland, one of the basic gland in our body, what is its function and what are the hormones that are released by the pituitary gland. Okay, I think you will understand. I will try my best to explain the each and every point about these glands. I will discuss pituitary gland as well as the thyroid gland also, if I have a time. Okay, let's see. Pituitary gland. Stop. Start. बंद करो. Pituitary gland. Okay. Pituitary gland is a gland that is found in the hypothalamus of our brain. First of all, I will discuss about the structure of our brain. From this forehead to here, this is our forebrain. And behind this lobe is called the midbrain, and downside of the midbrain is called the hindbrain. Pituitary gland is found in the thalamus region of our hindbrain. It is like a pea. Its shape is like a pea structure. मटर के दाने की तरह होता है. There are two lobes of pituitary glands. One is anterior side and another is posterior side. Okay. Now we will discuss about the anterior and posterior side of gland. Anterior lobe and posterior lobe. एंटीरियर जो वर्ड है इसका मतलब होता है सामने वाला हिस्सा पिट्यूटरी ग्लैंड का. पोस्टीरियर लोब का मतलब है पीछे वाला. ठीक है ना. एंटीरियर लोब सेक्रेट द टू टाइप ऑफ हार्मोन. नंबर वन इज सोमैटोट्रोफिन. Somatotrophin hormone, and other is thyroid stimulating hormone TSH. Anterior lobe of pituitary gland secrete two type of hormone. Number one is somatotrophic hormone, another is TSH, thyroid stimulating hormone. Posterior lobe of the pituitary gland secrete again two type. There are two lobes of pituitary gland. Number one is posterior lobe, number one is anterior lobe, another is called the posterior lobe. Anterior means सामने वाले लोब जो होते हैं pituitary gland का वो इस तरह होते हैं मटर के शेप के यूं होते हैं. एक होता है posterior, एक होता है anterior side. hypothalamus में होते हैं, दिमाग के दरमियानी हिस्से में होते हैं. ठीक है ना. Anterior lobe secrete two type of hormone. Number one is somatotrophin, another is thyroid stimulating hormone. The posterior lobe of pituitary gland secrete the vasopressin hormone and oxytocin. Okay. Now we will discuss first the anterior side of pituitary gland. इसका सामने वाला हिस्सा. Anterior side of the pituitary gland secrete the somatotrophic hormone. What is the function of somatotrophin hormone? Somatotrophin hormone is called the growth hormone. Growth hormone secreted by the pituitary gland. It is secreted during the growth period of an organism or in human being. Growth period started from 6 years to 18 years. The normal growth period for an adult in the human being is from 6 to 18 years. This is the growth period. If the somatotrophin is secreted normally during the growth period, the condition is called the gagnetism. It will speed up the growth process of the human being. इंसानों की जो ग्रोथ होती है ना, परवरिश, कद का बढ़ना, वजन का बढ़ना, वो सोमैटोट्रोफिन भी होता है. ठीक है ना. इफ सोमैटोट्रोफिन इज excreted normally, there will be a rapid growth in the human being. Growth means their tallness and their weight.
This condition is called the gagnetism. What? Gagnetism. If the somatotrophic hormone is secreted abnormally mean less than that of requirement, जितना उसकी ज़रूरत है उससे कम अगर secrete हो रहा है, then the growth of the individual will be affected. Individual की जो growth है ना वो affect हो जाती है, यानी उनका कद छोटा रह जाएगा, वजन कम होगा. This condition is called the dwarfism. Dwarfism या dwarf कहते हैं छोटे कद वाले बंदे को. बंदा छोटा रह जाता है, वजन भी कम और कद भी नहीं बढ़ता. अगर ग्रोथ पीरियड में ये कम एक्सक्रीट होगा. ठीक है. Another condition is after the growth period. If the somatotrophin is excreted after the growth period, it means from 16 years to above, it is activated and it is excreted. Then there will be abnormalities in an individual. Individual के अंदर कुछ abnormalities आ जाती हैं. For example, their upper jaws, their hands and their feet will be enlarged. उनके जबड़े, उनके हाथ बड़े बड़े हो जाएंगे, पाँव बड़े हो जाएंगे. दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ सोमैटोट्रोफिन हार्मोन. एंड इफ इट इज सेक्रेटेड if it is secreted after the growth period, this condition is called the acromegaly. इसे हम एक्रोमेगली कहते हैं. एक्रोमेगली क्या है? उनके अपर जाज, हैंड और फीट का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, बंदे की एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाती है. ठीक है ना. दिस इज द सोमैटोट्रोफिन हार्मोन. नंबर सेकंड इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH. It stimulates the production of thyroxine. It stimulates the production of thyroxine. Thyroxine hormone is necessary for the reproductive structure of male and female. It stimulates the reproductive structure of male and female. Male और female के जो reproductive structures है उनको ये stimulus करते हैं या stimulate करते हैं. ठीक है ना. नंबर सेकंड इज पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब्स का क्या काम होता है? देयर आर टू हार्मोन दैट आर secreted by the posterior lobe. Number one is vasopressin and number two is oxytocin. What is the function of vasopressin hormone? Vasopressin hormone is called the antidiuretic hormone. Antidiuretic means this hormone is responsible to reabsorb the water from nephron into the blood and from blood into nephron. If we have less amount of water in our blood, the vasopressin hormone is excreted. It reabsorbs the water from nephron into our blood. nephron से ये blood के अंदर water को absorb कर लेते हैं. ठीक है ना. This is called vasopressin hormone. आपने देखा होगा कि गर्मियों में आमतौर पे जो है ना वो यूराइन सिक्रेशन जो होती है ना वो कम होती है. यूराइन सिक्रेशन कम होती है और सर्दियों के अंदर जो यूरिनेशन है, यूराइन सिक्रेशन है वो बढ़ जाती है. गर्मियों में आमतौर पे जो आदमी है ना उसको स्वेटिंग होती है, पसीना, और जो हमारा एक्सेसिव वाटर है ब्लड के अंदर वो इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग वो रिलीज हो जाता है. वाटर बैलेंस किस तरह रिलीज होता है? स्वेटिंग, पसीना आने से. ब्लड के अंदर से पानी एवेपोरेट हो जाता है या निकल जाता है पसीने की सूरत में. गर्मियों में वैसोप्रेसिन हार्मोन कम रिलीज होता है और यही वजह है कि बंदे को यूरिनेशन कम होती है, यानी पेशाब कम आता है गर्मियों में. जबकि विंटर सीजन में हमें पसीना नहीं आता, स्वेटिंग नहीं होती, पानी के अंदर हमारे ब्लड के अंदर एक्सेसिव अमाउंट होती है वाटर की. जब वाटर एक्सेसिव होगा वैसोप्रेसिन हार्मोन कम रिलीज होगा. इट विल डिक्रीज इन लेसर अमाउंट, कम रिलीज होगा. ठीक है ना. देन द पर्सन फील अगेन एंड अगेन यूरिनेशन आफ्टर एन इंटरवल ऑफ पीरियड ऑफ टाइम. कुछ वक्फे के बाद मुसलसल उनको जो है ना वो यूरिनेशन होती है या वो सर्दियों में बार बार पेशाब करते हैं. ठीक है ना. तो vasopressin is an antidiuretic hormone. It is responsible to reabsorb the water from nephron into the blood. अब number second hormone of posterior lobe of pituitary gland is oxytocin. Oxytocin has two functions.
ऑक्सीटोसिन इज रिलीज ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ इन फीमेल। जब औरतें बच्चा पैदा करती हैं उस वक्त ये पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज होता है। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर यूट्रस होती है, वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करती है। यानी वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, जिससे उनकी जो बर्थ कैनाल है वो खुल जाती है और वो डिलीवरी होती है बच्चे की, ये उस वक्त रिलीज होता है। बैचलर में नहीं होता है, बैचलर फीमेल में नहीं होगा, गाय में नहीं होगा, बकरी में नहीं होगा, भैंस में भी नहीं होगा। जब वो बेबी की बर्थ देगी ना, बर्थ के दौरान ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और उनकी जो बर्थ कैनाल है उसको वो रिलैक्स कर देता है ताकि बेबी की बर्थ हो। नंबर सेकंड फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इज द इजेक्शन ऑफ मिल्क। ये मिल्क की इजेक्शन में भी हेल्प देता है। माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वो दूध जो आता है ब्रेस्ट से वो भी ऑक्सीटोसिन की वजह से, तो ऑक्सीटोसिन एक्टिवेट होगा, वो मिल्किंग करती है बच्चों को, गाय भैंसे बकरियां या ह्यूमन फीमेल वगैरह है, ठीक है ना। अब कमर्शियल स्केल पे भी ऑक्सीटोसिन जो है ना वो मार्केट में मिल रही है। जिस तरह कमर्शियल स्केल पे लोग भैंसों का दूध का काम करते हैं, तो वैक्सीन जो है ना दूध निकालने से पहले गाय को लगा देते हैं, तो जो 1.5 किलो दूध देने वाली गाय है वो 3 किलो दे देती है, वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा देते हैं मिल्किंग से पहले पहले। ऑक्सीटोसिन हेल्प इन द इजेक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क की इजेक्शन में भी हेल्प करता है एंड इन द ड्यूरिंग द डिलीवरी पीरियड ऑफ द वोमेन, वोमेन के डिलीवरी पीरियड में भी होता है।